Degree of operating leverage. This is the topic of our module number 225. This is our course of financial management. Before this module, we have talked about leverage and we have also talked about operating and financial leverage. अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी फर्म के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट है, यानी हम यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट के अंदर कितना ऑपरेटिंग लेवरेज पाया जाता है. We discussed one point that higher is the proportion of fixed cost, we will have more operating leverage. That is correct. But is there a formula, is there a device to measure the level of operating leverage? We say that this device is called DOL, that is degree of operating leverage. यानी जैसे हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं या हम किसी यार्ड स्टिक से हम लेंथ को मेजर कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से DOL एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी बिजनेस या फर्म के ऑपरेटिंग लेवरेज को मेजर करते हैं. सो वी कॉल इट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ दैट which we'll discuss in this module. But before that, a very important thing that we need to remember that DOL or operating leverage has a direct link with the risk. यानी जब हमारा DOL बढ़ता है, the value of DOL is higher in any business organization, that indicates that the organization has a higher level of operating leverage. And any organization which has a higher level of operating leverage will have a higher level of risk. Higher level of risk क्यों है? क्योंकि जब leverage बढ़ता है तो अच्छे हालात में सेल्स के बढ़ने से, प्रोडक्शन के बढ़ने से प्रॉफिट के अंदर एनहांसमेंट मैनी फोल्ड होती है. यानी सेल्स अगर 10% बढ़ेगी तो प्रॉफिट शायद 15-16% बढ़े. लेकिन अगर हम इसको रिवर्स करके देखें कि अगर सेल्स कम हो जाए तो उस केस में ये फिक्स्ड कंपोनेंट जो है ये हमारे प्रॉफिट को उसी तेज रफ्तारी से रिड्यूस करता है. एंड दैट इज व्हाई वी से दैट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज हायर. दैट मींस द रिस्क कंपोनेंट इज हायर. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस DOL value. There's one formula which is more like a theoretical formula, I would say, of DOL, where we say that it is actually the percentage change in EBIT. EBIT stands for earnings before interest and taxes. A question is that why we not take the profit after tax figure? Because in the profit after tax figure, the amount of interest is also deducted. And interest is the financial cost which we consider not in the operating leverage but in the financial leverage. इसलिए हम interest से पहले वाली profit की figure को consider करते हैं, and that is called profit or earnings before interest and taxes. So sales के change होने से हमारे EBIT के अंदर कितनी percentage change आती है, this is what is degree of operating leverage. Iska formula in terms of the values of fixed and cost and EBIT is like this. If we add the amount of fixed cost which is there in that system in the amount of EBIT that we have and we divide the sum by the same value of EBIT, what we get is DOL. Now in this case, if we have got 500,000 EBIT and 800,000 fixed cost, the value of DOL comes out to be 2.6. How do we interpret this? हम ये कैसे, ये 2.6 तो एक नंबर है, ये इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये हमें क्या बताता है? This is basically an indication that with 1% change in sales, our
profit will increase by 2.6%. यानी अगर हमारा प्रॉफिट 10%, हमारी सेल्स 10% बढ़ेंगी तो हमारा प्रॉफिट 26% बढ़ जाएगा. अगर हमारी सेल्स 100% बढ़ेंगी तो हमारा प्रॉफिट 260% बढ़ जाएगा. यानी प्रॉफिट का इंक्रीज सेल्स के इंक्रीज का 2.6 टाइम्स होगा. नॉट परसेंट बट 2.6 टाइम्स. नाउ how can we calculate the value of DOL when we are talking about in terms of units? So the formula is that for any given quantity, we divide that quantity with the difference of that given quantity and the break-even quantity, and we divide the current quantity with the difference, and what we get is the value of DOL. So let's summarize our discussion and let's conclude this discussion on the degree of operating leverage by saying that DOL is the measure of operating leverage. जितना DOL ज़्यादा होगा उतना ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा होगा, उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा. लेकिन जो फर्म ग्रो कर रही है, जिसकी सेल्स बढ़ रही है, उसके लिए रिकमेंड किया जाएगा कि वो अपने DOL को हायर रखे, क्योंकि बढ़ती हुई सेल, इंक्रीज होते हुए रेवेन्यूज़ के अंदर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के एनहांसमेंट और इंक्रीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं. So in the next modules we'll talk about in detail the other part of this leverage, that is financial leverage.